मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 22nd एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है द सुपर टैलेंटेड नवजोत सिंह। पाजी की हालचाल? Thank you for having me. थैंक यू सर, आप आए, मतलब I'm honored. ग्रेट। सो मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए आपके बारे में, क्योंकि मैं आपको कई सालों से जानता हूँ। जस्ट फॉर द व्यूअर्स। I have such a long, यस सर। so many things to say, but I'll keep it short. I'm basically a blogger and hip hop journalist turned consultant turned music executive. I'm now heading A&R at Mass Appeal India, and I'm also a member of the Recording Academy, which is the Grammys. ग्रेट सर। आई थिंक छोटे में इतना ठीक बहुत है। हाँ, छोटे में बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी है, मतलब कई सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें आपने की है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ लोगों को कि मैं पाजी को कैसे जानता हूँ। मैं एक चंडीगढ़ का बहुत ही लेजेंडरी हिप हॉप क्रू है, क्रू 172। तो मैं उनके साथ पॉडकास्ट करना चाहता था, इंटरव्यू करना चाहता था। तो उन्होंने बोले कि हमारे मैनेजर है, आप इनसे बात कर लीजिए, एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए। तो वहाँ से पाजी ने बोला कि सवाल भेज दीजिए मुझे, मैं फिर करते हैं। तो मैंने पाजी को सवाल भेजे, इन्होंने बोला लव द क्वेश्चंस, वी कैन डू इट, लेट्स गो। और उसके बाद सीधे फिर मैंने आपका नाम सुना लकी भैया से, टीम एवोल्यूशन देहरादून उत्तराखंड। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने देखा, मतलब आपने तो गेम पूरा चेंज ही कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मेरा काम करने का तरीका, थोड़ा सा मैं लो की पसंद करता हूँ। आई लाइक दैट माई वर्क शुड स्पीक फॉर इट सेल्फ। तो थोड़ा सा मैं अंडरग्राउंड रहना पसंद करता हूँ। जस्ट डू द वर्क एंड देन लेट इट स्पीक। मतलब जी फाड़ काम करते लेकिन घमंड नहीं करते। ये कह सकता हूँ ना मैं। पाजी मेरे को बताओ, आपने एज अ हिप हॉप जर्नलिस्ट शुरू करा, तो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस थिंग? अगेन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं छोटी करके उसको बताता हूँ। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी बिग म्यूज़िक फ़ैन। तो शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था म्यूज़िक का। मैं ड्रम्स प्ले करता था स्कूल में, हाई स्कूल में। सो आई वॉज लीडिंग माई हाई स्कूल बैंड बेसिकली। सो आई वॉज अ परकशनिस्ट। तो बस वहाँ से प्लस म्यूज़िक हमेशा इट यूज्ड टू बी इन द हाउस। माई एल्डर ब्रदर was always playing all kinds of music in the house, and Prince is like a god to him. So Prince and Michael Jackson, Beatles, all that. But also on the pop side, on the rock side, Blur, Oasis, and obviously Desi music, Punjabi music, and also he used to play a lot of old school hip hop. Okay. So Biggie and Tupac and LL Cool J and Puff Daddy, Coolio, Snoop Dogg, Dr. Dre. So when I was approaching my teens, obviously my music सुनते रहता था ये सारा कुछ घर पे. But when I was approaching my teens, the hip hop music, I gravitated towards that the most for some reason. तो मुझे वो बहुत ज़्यादा attractive लगता था. Like ये beats, the thump and just the style of music. I just naturally gravitated towards that. I didn't really decide कि ये मुझे करना है। मुझे किसने बोला है कि ये म्यूज़िक हॉट होने वाला है तो ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। I just gravitated towards that and just somehow it struck a chord with me। और बस फिर मैं उसको रिसर्च करने में शुरू हो गया, कैसे म्यूज़िक बनता है और कहाँ से है। रिसर्चिंग अबाउट African American culture and how did it originate and where it came from, why do they say the things they say, stuff like that. So it was important for me कि मैं उसका पूरा at least basic level पे history research करूँ कि कैसे होता है। बस धीरे धीरे करते करते I just started one fine day. I used to visit a lot of blogs and used to be called the blog era. Yeah. And I used to visit a few blogs on the internet covering American hip hop music. तो बस एक दिन मैंने decide किया I have things to say about this music and I have a different perspective. So if I start my own, maybe I have a unique perspective on the same stuff that they are writing about. Yeah. So I just started, and a lot of the information that I was discovering on the internet, I started to realize that मेरे पास उनसे जब वो पोस्ट करते थे, मेरे पास वो सेम इन्फॉर्मेशन, कोई आर्ट वर्क है, कोई ट्रैक लिस्ट है एल्बम की, कोई एल्बम इन्फॉर्मेशन है, कोई फीचर्स की इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे पास 12, 14, 20 घंटे पहले ही होती थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर मैं खुद
अपनी साइट शुरू कर देता हूँ और ये मैं पोस्ट करनी शुरू कर देता हूँ, आई माइट बी एबल टू बीट ऑल दीज पीपल फॉर टू द स्टोरीज. एंड आई स्टार्टेड एंड इट्स जस्ट हैपेंड. So it just Now- it kept going on, and next thing I know, you know, I'm now running one of the biggest blogs on the internet, and it happened, it happened over a period of 3 or 4 years, but it feels so quick now looking back. And now it's cult and great. Yeah, now obviously वहाँ से फिर I graduated from being just a journalist to an industry person, analyzing the industry, analyzing artists, being a consultant. So I helped a few labels in America as a consultant, just helping them out with rollout strategy and sound. आर्टिस्ट्स को कौन सा सिंगल पहले करना चाहिए, कौन सा सेकंड करना चाहिए, कौन से का वीडियो होना चाहिए, कौन सा गाना एल्बम में नहीं डिज़र्व करता है होना, इसको कट करना चाहिए. सो थिंग्स ऑफ दैट नेचर, रोल आउट स्ट्रैटेजीज. सो वहाँ से करते करते देन आई स्लोली, ऑब्वियसली मीडिया बिजनेस काफ़ी ट्रिकी बिजनेस है. सो मीडिया बिजनेस में आप सस्टेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है जो विच यू मे नॉट बी कंफर्टेबल विद. And I was not very comfortable with just posting very gossipy stuff. So then I thought, okay, I need to transition into being, I have this skill, so maybe I can transition into being an executive. So that's how the journey of being an executive started, and now here I am. First I was a consultant, and I'm now an A&R, and thankfully I have this great opportunity to head A&R at Mass Appeal India. Great पाजी, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी. Long 15-year journey. 15 years. 15 years. Great. मतलब मेरे को Thank you. ये जानना है, जो मैंने जब वेबसाइट देखी थी हिप हॉप एंड मोर, तो पहले मुझे पता नहीं था, मतलब ये सडनली मैं ऐसे ही चेक कर ली तो मैंने देखा यार बहुत सही स्टफ है, तो ये ऐसा भी हो सकता है. फिर बाद में पता लगा कि उसको आप रन करते हो. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग आर्टिकल क्या था, या क्या आपने ऐसा गेम चेंजिंग करा जो आपको लगता है कि मेरे को सीधे जैसे बाहर के जो आर्टिस्ट हैं वो आपको बुलाने लगे कि यार इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एल्बम आ रही है, आप इसको सुनो, क्या बेटर हो सकता है इसमें? एक्चुअली एक गेम चेंजिंग चीज़ रिकाउंट करनी मुश्किल है, बिकॉज हो क्या रहा था कि मैं एक तो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वोकल था अबाउट व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक. सो एंड मैं हमेशा अपनी वॉइस जो है वो कोशिश करता था कि मैं हार्श तरीके से ना कम्युनिकेट करूँ. सो अगर कोई गाना है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, एल्बम है, तो मैं उसको ट्रैश या ऐसे वर्ड मैं कभी यूज़ नहीं करता था. और यूजिंग वर्ड्स लाइक स्ट्रगल रैपर्स एंड यूजिंग वर्ड्स लाइक डिमीनिंग काइंड ऑफ वर्ड्स. सो आई ऑलवेज हैड दिस, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. सो मैं किसी भी एल्बम या सॉन्ग को ट्रैश नहीं बोलता था. इफ़ आई डोंट लाइक इट आई विल से दिस इज़ नॉट माई टेस्ट और आई डोंट लाइक इट. बट हो क्या रहा था कि a lot of my predictions about what song will be a hit from the album and what song will go big, and पहले दिन ही आता था and I would say okay, this song is going to smash and things of that nature. First week sales क्या होंगी एक album की, lot of my predictions and calculations used to come true. Okay. And हो क्या रहा था कि फिर labels and managers and all these people started noticing that कि जो मैं बोल रहा हूँ a lot of my predictions are coming true, so this guy probably knows something. So तब फिर मुझे approach करना शुरू कर गए थे लोग धीरे धीरे. So it wasn't like one single moment. Obviously I have a couple of very big moments on the site which happened, which are not really moments जहाँ से मुझे artists ने approach करना शुरू कर दिया, but just for the site as a media person, they were very big moments for the website. So that's great. मतलब ये सबसे अच्छा है ना प्रेडिक्ट करना कि कितना बिजनेस करेगा, ये गाना सुपर हिट होगा, आगे चैट्स पे इतने टाइम तक ये रहेगा. That's the thing. Yes, I think again ये ना ऐसी चीज़ है, इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है. This is just something you just have to trust your gut and instinct and whatever you may call it. But ऐसा नहीं है कि I'm always right 100% of times. It's nothing like that. I'm wrong many times as well. So मैं कोई ऐसा नहीं हो कि जो भी मैं कह रहा हूँ वही होगा, ऐसा नहीं है और ऐसा पहले भी नहीं था. But ये है कि हाँ, I always had that trust in myself that I know what it takes to be a successful executive and also understand artists and their creative side
how to communicate with them, and how to understand their vision, and how to work with their vision, things like that. So I think that helped me in my journey. ग्रेट. मुझे ये अच्छा लगा जैसा आपने बोला ना कि अगर मुझे किसी का गाना पसंद है तो ये नॉट माई कप ऑफ टी, मेरा टेस्ट नहीं है. आज बहुत सारे लोग सॉन्ग रिव्यू करते हैं, एल्बम रिव्यू करते हैं एंड सीधे ही बोल देते हो ये क्या गाना है, मज़ा नहीं आया. आप what's your point? हाँ जी, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है. सो देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स दैट आई डोंट लाइक एट ऑल. सो आई वुड से ओके आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग एंड दैट्स ओके. बट मैं फॉर एग्जांपल मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आई हेट दिस सॉन्ग. लाइक हेट मैं वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ म्यूजिक में. और ट्रैश और गार्बेज वर्ड्स लाइक दीज आई डोंट यूज़ बिकॉज somebody made that effort in creating that piece of work and it's their art and their work. So उन्होंने बनाया thinking for them is the best thing that they've made. Yes. I'm not the one to judge art like that and I just call it trash or so. That's just how I operate and how I've always operated. It's so your to way. each his own, but to each their own. But I don't call trash or garbage. I don't use words like that. हाँ, I like it. वही मैंने बोला ना कि मुझे पसंद है. बट मैं ये बोला कि आज के टाइम पे जब लोग यूज करते हैं तो आपका क्या उस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? काफी लोग शॉक वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं, फॉर व्यूज आल्सो. या कोई बड़ा यूट्यूबर है, कोई स्ट्रीमर है, उसने बोला वो he called Drake's album trash or he banned his album, और निकी मिनाज का सिंगल उसने ट्रैश बोल दिया है. अब now there'll be like whole new content and reaction based on just that comment from that person. So it's a content strategy game also from the media side. Again, that's what I'm saying. आजकल की जो मीडिया है उसमें sustain करना बहुत मुश्किल है. And without these kind of things that you are doing, इसके बगैर for example बहुत मुश्किल है. Like only written article stuff में के basis पे कोई भी आजकल कितनी सारी जो some of the most popular websites in America also are folding and they are struggling. People who don't have a video strategy or people don't dabble into some of the gossip stuff, it's very difficult for them to sustain. So unfortunately time aisa hai internet ka and social media ka ke everything runs on social media and everything is like reactionary and you need that shock value to create और जल्दी भी चाहिए लोगों को. तो I think उस point of view से भी world we are living in, unfortunately or fortunately. Got it. हाँ, मतलब आज के टाइम पे हो गया ना कि लोगों को बहुत जल्दी भी चीज़ें चाहिए, तो कुछ ऐसा कर दूँ कि सारा अटेंशन मेरी तरफ आ जाए. Again, I don't know if it's good or bad, but that's just how it is, in today's world. मेरा एक पर्सनल सवाल है कि मैं जब देख रहा था आपको हिप हॉप एंड मोर वेबसाइट पे करते हुए, मेरा ये था कि आपने मतलब इंडियन सीन को कभी कि मुझे यार इंडियन हिप हॉप सीन को भी कवर करना चाहिए. तब इतना था नहीं, पिछले अगर 6 सालों की बात करें तो. अभी इस टाइम पे एक्चुअली मेरा कुछ है प्लान. I'm trying to see if I can do something within the media outlet, within hip hop and more, to do something to cover Desi hip hop and Desi scene, and that obviously includes Punjabi and other languages as well. But back then obviously itna scene bada nahi tha for me to cover, and also genuinely I was not consuming that music. I was aware of it, whatever is happening. Yeah. It was bubbling, and I was aware of the Orkut scene and everything. So I was keeping an eye out because I was always good with finding stuff on internet and keeping a tab on what's happening. But मैं खुद ज़्यादा उसको नहीं consume कर रहा था. But I was watching what's happening. उस time पे naturally क्योंकि मैं consume नहीं कर रहा था and I wasn't really vibing to that music, तो इसलिए it was sort of unnatural for me to dive into it and start writing about it क्योंकि मैं खुद उतना I wasn't really into it. But obviously last 5-7 years से इतना revolution हुआ है देसी hip hop scene में and and other non-film music in South Asia. Now things are very exciting and so I do plan to I'm living like twin lives, I'm doing my American hip hop stuff as well. Yes. So वो भी मुझे करना पड़ता है and I'm heading A&R at Mass Appeal India for all the Desi stuff. So I have to keep a tab on whatever is happening here and I have to keep a watch on whatever is happening in America as well. So it's now
dual personalities and double the work, but I enjoy it. It's fun, but I do plan to do something in the near future. मैं सोच रहा हूँ उसको कैसे अच्छे तरीके से उसको execute करें. ग्रेट मैन, ऑल द बेस्ट पाजी. Thank you. ये बहुत अच्छा भी साउंड करता है कि फाइनली जो इंसान हिप हॉप एंड मोर में इतनी चीज़ें कर रहा था फॉर द वेस्टर्न, अब इंडियन हिप हॉप या देसी हिप हॉप कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ. I'll try my best to do it nicely. एक तो हिप हॉप एंड मोर वेबसाइट है, दूसरा आपका 86 Sonics. 86 Sonics, वो क्या है? So 86 Sonics basically it's like a consultancy slash A&R, independent A&R slash little bit of management stuff that I started to do when I was transitioning from from being just a media personality from being a writer. So तब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जब मेरा थोड़ा सा A&R का काम मुझे आ रहा था and consultancy का आ रहा था, so obviously then I decided I need like a separate entity for this. I can't just merge it with the media business. And so तब मैंने फिर decide किया, I took a long time deciding the name which really represents me and what I'm trying to do. So obviously Sonics was something that is like one of my favorite words, and 86 is my birth year, so I just combined the two and it rhymed, so simple as that. But it's basically covering all of those things. So abhi kuch bhi aise kuch non-mass appeal stuff hota hai which I'm excited about, and which does not conflict with my mass appeal stuff, I do it through 86 Sonics. ग्रेट मैन. मतलब आई थिंक बहुत सारे आइडियाज है आपके पास जिसको आप करते रहते हो, जो कि सीन के लिए बहुत अच्छा, और मतलब आपके लिए कोशिश तो करते हैं. सुपर अच्छा है. कोशिश करते हैं. अगर इसे कोशिश करते हैं तो मैं भी ट्राई करूंगा थोड़ा सा आपसे इंस्पायर और होकर. नहीं, you do a great job in what you do. थैंक यू सर, आप सही सीख रहे हैं. नहीं. एक चीज़ मेरे को जाननी है, नाउ यू आर हेड ऑफ A&R ऑफ मास अपील इंडिया. हाँ जी. ये चीज़ कैसे हुई? So the funny thing is that I was in touch with Annie, who is the VP marketing. She's in the senior leadership at Mass Appeal India. Okay. So I knew Annie from her past 3 or 4 jobs, 3-4 jobs ago. तो मैं उनको तकरीबन अब 10-11 साल से जानता हूँ. And she used to sort of be in touch with me for ad campaigns or campaigns to run on my site. So she used to work with agencies. I remember we ran a 50 Cent campaign once, an ad campaign for his the Big Ten mixtape. I think it came out in 2010 if I'm not wrong. Okay. So तब हमने campaign run किया था, ad campaign run किया था. So she ran that with me on my site. तो मैं उनको तब से जानता था. So we were always in touch. Okay. Then obviously when everything was bubbling here in India and Mass Appeal first came in partnership with Universal, I had my eye on it. I'm like, okay, let me see, if I can. And I was having a couple of conversations, casual conversations with them, कि हाँ, I can come in and help. But situation कुछ ऐसा firm नहीं बनी. But then, when Universal India and Mass Appeal parted ways. Yes. And Mass Appeal became like a independent label, Mass Appeal India. Then Peter Bittenbender, who is the CEO of Mass Appeal, he gave me a call out of the blue and he's like, it's time, like let's do this. So I was then we had a meeting. By chance, I was traveling to Vegas to attend the Grammys, and he was also supposed to be there because Nas was nominated. Yes. तो फिर वहाँ पर हम मिले, and then we finalized and I came on board. So I came on board initially as a consultant A&R, but then earlier this year he promoted me to head of A&R. It's great, and you are doing good and big projects. Big का कुछ नहीं, big small. We'll talk about it. Big, small, everything is. You work with all kinds of artists, so big projects भी होते हैं, small होते हैं. You try to do justice to it and bring the same amount of passion to बड़ा artist, छोटा artist. हाँ, मैं तो हर project को देखो big समझता हूँ हमेशा. हाँ, बिल्कुल big projects. A lot of people like, oh, you're doing like these big artists. That is also it's always exciting, but it's also very exciting to work with up and coming artists who are coming up in the game, and you help develop them and develop their sound. Abhi 1 घंटे पहले we did a deal with
an up and coming artist. Okay. I can't announce it right now, but he literally has 1,500 followers on Instagram, for example. But super exciting. So I'm Great. so excited to work with him at Mass Appeal. So we'll be announcing him soon. ग्रेट. मेरा अगला सवाल वही था. आपने जो बताया ना, जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट है 1500 फॉलोअर्स है, उसको साइन कर लिया, जो भी आई डोंट नो क्या डील है. हाँ जी. बट मेरा अगला सवाल यही है कि मास अपील इंडिया का यहाँ पर हिप हॉप सीन में उनका क्या विजन है, वो क्या ढूंढ रहे हैं, किस तरह के आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं, वो हिप हॉप सीन को किस तरह से देखते हैं. We want to be the best label across South Asian music and not just hip hop. Okay. So we want to do things beyond hip hop as long as it makes sense and as long as it matches our brand. So obviously there's some form of music which we can't venture into, but we don't want to do just hip hop, and we want to become the most advanced and artist friendly label around the region, and help produce the best music possible and take Indian music and South Asian music to the biggest stage in the world. That's the vision. That's the vision. Great. अगर कोई आर्टिस्ट साइन होता है तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं, मतलब मास अपील जो उसके फ़ायदा, मतलब नॉट फ़ायदा, मतलब उसके करियर को और अलग लेवल पे ले जाएगा. एक चीज़ जो हमें थोड़ा सा सेट अपार्ट करती है एट मास अपील इंडिया इज़ दैट हम डिफरेंट तरीके की डील्स कर सकते हैं विद आर्टिस्ट. सो हमारा ये नहीं है कि हमें बस एक ही तरह की डील है कि हम वी विल ओन योर मास्टर्स एंड वी विल यू विल बी एन एक्सक्लूसिवली साइंड आर्टिस्ट टू अस एंड और अगर हम दूसरे आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द अमाउंट ऑफ मनी. ऐसा नहीं है. वी आर वेरी फ्लेक्सिबल इन आवर डील्स, एंड आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स लाइक वर्किंग विद अस, बिकॉज वी कैन मूव आवर terms and we can move our clauses in the agreement in a way that makes the artist comfortable, and we can do different kind of deals with artists. तो हमारा ये है कि हम we want to offer the best A&R and marketing services is number one, but also the brand value that comes to Mass Appeal, an iconic label, with co-founders such as Nas, one of the most iconic rappers, legendary in the world, Yes. the guru. So when we are approaching artists, we want to offer like, hey, like there is nobody, we want to tell them like, look, there is nobody else that understands hip hop like we do, plain and simple. And we want to we try to tell them that, and we try to lure them with that, and also provide some great marketing help, which is not the traditional old school way of just trying to just boost numbers purely. Okay. It's also about how to reach new audiences who are willing to discover you, because we feel that a lot of the listeners, they don't know what they want. Music and product has to be sort of presented to them, and then they have to decide whether they like it or not. So we believe in that. So we believe in offering great marketing support, great A&R support, and favorable contracts where they don't feel that they are now like stuck in a situation where उनको उन कॉन्ट्रैक्ट से निकलना मुश्किल हो जाएगा, या उनको कुछ करना है तो हम उनको करने नहीं दे रहे हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि जितना फेवरेबल सिचुएशन हो उतना अच्छा, बिकॉज वी वांट टू वी वांट टू सी us winning at the same time. We want the artist and the label to win at the same time. Win-win situation from both the side. Exactly. Yes. That's the aim. काफ़ी क्लियर और सिंपल शब्दों में आपने बताया. एक चीज़ मेरे को ये जानना है कि किस तरह के आर्टिस्ट मास अपील इंडिया ढूंढ रहा है, नॉट एज एन रैपर, क्योंकि बिकॉज आपने भी बोला कि रैपर के अलावा पूरा म्यूजिक सीन हम कवर करना चाहते हैं, तो किस तरह के आर्टिस्ट मास अपील ढूंढ रहे हैं. It's funny, this reminds me, कुछ दिन पहले we were having a discussion during our call with our CEO Peter, and he's like, we should just work with anybody who's dope. Simple as that. Just one sentence. Anybody who's just great. But of course, condition ये है कि it has to match our brand value. Like we can't say be working with typical Bollywood stuff, for example. Obviously, some stuff will
will come into our world organically and naturally, but there's some, you know, if an artist is, if artist is making like a, say like hard rock music, I don't think we'll be able to work with them, because I don't think we will be able to do justice to that kind of music, because we don't specialize in that. Okay. So we don't want to take something where we don't feel comfortable in, you know, just an example. Yeah. It's nothing good or bad, but we want to do justice to the project too. So हमारा ऐसा नहीं है कि हम इस kind of artist को ढूंढ रहे हैं, या we are hip hop is the thread, you know, that's our cloth, but obviously we're doing so much Punjabi music, anything in Punjabi music which is influenced, for example, by hip hop or urban sound, you know, we're up for it, because ये सारे जो spheres, obviously now we've, you know, we've just done deals with three artists from the south, me and my colleague Ranbir Kapoor. He's an A&R and coordinator at Mass Appeal, so he assists me in all of this, and you know, we just did a deal with three South Indian artists, three Malayali artists who we are so excited about. So we want to, there's no set thing, and we want to work with artists from all regions. You know, we want to cover everything, anything which excites us. Again, sometimes you are a big artist and we want to work with a big artist because we feel like, okay, we'll put up the numbers and you know, all this like numbers and market share, and that's the industry standard. It's always going to be there. It's been there for decades. But we also want to work with up and coming artists who sound exciting. Who when we listen to them, हमें लगता है कि हाँ यार, ये sound बहुत exciting है, या ये इतनी unique है, हमने पहले ये sound बहुत time से नहीं सुनी है. Like the artist that I was telling you about, जो आज ही deal sign हुई है, जब मैंने उसका music सुना तो मुझे लगा ये sound मैंने नहीं सुनी है पहले, इस style में delivery मैंने नहीं सुनी है, and I immediately wanted to work with him. So you know, I do always try to sit with the artist and understand their vision, and थोड़ा सा म्यूज़िक आइडियाज़ एक्सचेंज करे बगैर मैं डील करना नहीं पसंद करता हूँ लेवल पे. हम ज़्यादा यही कोशिश करते हैं जाके अच्छी तरह उनके साथ बैठें, उनके आइडियाज़ सुने, उनकी विजन सुने, क्योंकि उनकी विजन हमारे विजन के साथ भी मैच करनी चाहिए. अगर उनकी विजन कुछ और है, हमारी कुछ और है, तो वो फिर सिंक नहीं है. नो मैटर जितना भी वो फाइन आर्टिस्ट हो, पर अगर वो एक चीज़ चाहता है और हम कहते हैं कि अच्छा ये ऐसी चीज़ है जो हम डिलीवर ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो बात नहीं फिर बनती डील करने की, क्योंकि वो फिर आप जो रिलेशनशिप ही है वो आप यू नो बैड फुटिंग पे स्टार्ट कर रहे हो, और पोल्स अपार्ट भी, मतलब मुझको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो यू नॉट ऑन द सेम पेज, तो वो बहुत ज़रूरी है. यस, आपने सही बोला कि यू नो यूनिक काम और बहुत ही डोप. बिल्कुल, anybody who's dope. that's what our CEO says, and that's literally the motto. जो डोप काम कर रहे हो, डोप नहीं. बिल्कुल नहीं, वो डोप नहीं. वो डोप नहीं. कल मैं आकाश एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, आकाश का है, तो मैं उसका पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसने बहुत सारी यू नो बातें बताई एज अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मेरे को लगा कि आर्टिस्ट को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, कि उनको मास्टर राइट्स नहीं पता, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता, और वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक तो एग्रीमेंट्स या बिना पढ़े साइन करते, फिर बाद में वो कलेश होते हैं, सोशल मीडिया पे पंगे हो जाते हैं. बिल्कुल. तो आपको लगता है कि आर्टिस्टों को यू नो इन चीज़ों को लेके एजुकेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है? एक बात से मैं बहुत खुश हूँ कि लेटली मैंने ये नोटिस किया है कि आर्टिस्ट्स मच मोर अवेयर हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट. इनफैक्ट हमने भी जो अभी लास्ट 5 और 6 एग्रीमेंट्स, और सारे एग्रीमेंट्स मैं ही संभालता हूँ, मैं ही देखता हूँ, उनको ओवरसी करता हूँ, क्योंकि मेरी लॉ बैकग्राउंड है, सो मैं यू नो थोड़ा सा उसको फिर मैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेता हूँ. जितने भी आर्टिस्ट के साथ हमने अभी लेटली किए हैं डील्स, सारों ने बहुत अच्छी तरह हमें आगे से फीडबैक दिया है कि इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो टू मेक इट सिंपलर लैंग्वेज, या इसको हटा सकते हो, इसको टर्म चेंज कर सकते हो. सारों ने कुछ ना कुछ फीडबैक दिया. कईयों की फीडबैक 10 पॉइंट्स होती हैं, कईयों की 2 होती हैं, बट आई वाज एक्चुअली टेलिंग समबडी जस्ट यस्टरडे के आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एक्चुअली हैप्पी बिकॉज फीडबैक जब आता है कि उसमें ये वी डोंट माइंड चेंजिंग 10 थिंग्स एज लॉन्ग एज इट मेक्स सेंस. बट मुझे खुशी होती है इस बात की कि दैट मीन्स दैट आर्टिस्ट्स आर मच मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, टेकिंग इंटरेस्ट आल्सो. बिल्कुल. एंड whether the artists or their teams or the managers or the lawyers, whoever it is, but whoever is representing them or artists themselves,
इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि उनको अब काफ़ी चेंज हो गया अब सिनेरियो इंडिया में। आई एम वेरी हैप्पी कि ऑब्वियसली जितना हम एजुकेट करेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है, जितने एजुकेट करेंगे उतना बेटर है। और मैं जितने भी आर्टिस्ट, अगर मैं किसी के साथ डील भी नहीं कर रहा होता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प आउट एंड आई हैव सो मेनी आर्टिस्ट हु कॉल मी और जस्ट विल ईमेल मी और टेक्स्ट मी और डीएम मी के ये मैं इनके साथ कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैं उनको, अगर वो कंपेरेटर लेबल भी हो तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ कि हाँ नहीं ये ठीक नहीं है, इसको आप चेंज करा लो, सो that's always healthy for the entire music industry. So that's very great. So guys, he is the right person. इनको DM करो Instagram पे जाके अगर कुछ भी पूछना हो. Right. I was a lawyer. I'm not a lawyer anymore. but you are open to help. Yeah, of course. No. Jokes apart, always open to help. Great. As much as possible, as much as I can with my limited time. जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं करता हूँ help. Definitely. That's a great thing. I love doing that. Great. भाई एक चीज़ जो मैंने काफ़ी नोटिस करी ऑन योर वेबसाइट, ट्विटर पे, कि आर्टिस्ट जितने भी जो सेलिब्रिटीज़ हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वो काफ़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके रिव्यू की, या जो भी आप ट्वीट करते हो वो वापस रीट्वीट करते हैं। तो ये जो आर्टिस्ट आपने भी PR बनाया है, ये कैसे बनाया? आपको एक्सक्लूसिवली आपको स्टूडियो बुलाते हैं, सुनाते हैं कि मेरी अपकमिंग ये मेरा सॉन्ग है, EP आ रही है, आप सुन के बताओ क्या अच्छा क्या नहीं है। इसका कोई छोटा कोई शॉर्टकट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। आई जस्ट ये सवाल भी इसका जवाब देना इतना मुश्किल है। आई जस्ट केप्ट डूइंग गुड वर्क बेसिकली, एंड आई अगेन थोड़ा सा आई ऑलवेज ट्राई टू टेल पीपल लाइक मूव विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, एंड दैट्स लाइक ऑलवेज बीन वन ऑफ माई it's been a motto for me, and respect the artists and what they want and what they need, and always be, and I do try to be as honest as possible. तो ये भी है कि जब मैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा होता हूँ तो वो मुझे पूछते हैं कि हाँ how is this sounding or how is this song sounding, तो again without being harsh मैं काफ़ी honestly बता देता हूँ कि ना this song I don't think it deserves to be on the album. It's like a weak song, for example. It's not a good song. So वो ये मैं बोल देता हूँ. I think with that kind of a attitude towards them, I think वो धीरे धीरे करके, and also with how I was able to place myself as being somebody who really respects the culture, and because hip hop culture is a sensitive, it's a sensitive genre. Like there's certain things you have to be careful about doing. Some things you can't be like just running your mouth or disrespecting people or disrespecting the genre. Especially somebody like me who's like in American hip hop, I'm like almost like a guest in the culture. So for me, it was very important कि मैं पहले अपने आप को prove करूँ with my work. I really respect and care about the culture. I'm not a culture vulture. Not just here to just earn a bunch of clicks and some money. So वो ज़रूरी है. I think वो करते करते, but वो सिर्फ आपको 2 महीने में या 4 महीने में नहीं होता है. It's a process and it's a multiple years long process जिससे आप फिर अपनी आप अपनी reputation बनाते हो. फिर धीरे धीरे करके artists started interacting with me and trusting me with their with my opinion and trusting me with their music. So I feel it's an honor, like people still, sometimes people, for example, see the DJ Khaled clip that I posted on Instagram, and again that was so unexpected because I have never been in the studio with Khaled. We've spoken, but I've never been in the studio, but I was just on live when he was doing a live. I just tuned in and he just saw me and just shouted me out like that and said such such nice things about me. Things like that are very unexpected. They feel very nice, but they're so unexpected. मैं ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने उसको बोला था भी मेरे बारे ऐसे कुछ बोल देना. It was so unexpected for me. I was taken aback. So but those things can't be manufactured. वो आप धीरे धीरे आप अपनी reputation बनाते हो अच्छे काम से और hopefully फिर आपको लोग respect करते हैं. So thankfully I've been blessed to be in that situation. Okay. समझिए. मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर कभी आर्टिस्ट सुनाते हैं म्यूज़िक तो फीडबैक देते हैं कि अच्छा ये बेटर हो सकता है, तो समटाइम वो होता है कि अच्छा आप बताओगे, तो ये होता है कि एक कभी कभी बंदा घबरा जाता है कि ऑनेस्ट फीडबैक दूँ कि नहीं दूँ. बिल्कुल. बहुत अभी भी जब भी मुझे कोई पूछता है या मैं
स्टूडियो में हूँ आर्टिस्ट के साथ या आई एम वर्किंग ऑन क्रिएटिव आइडियाज़, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी, जितना मर्जी मेरा क्लोज रिलेशनशिप हो उस आर्टिस्ट के साथ या जितनी मर्जी मेरी क्रिएटिव फ्रीडम हो, ऐसे आप कुछ भी नहीं बोल सकते ज़्यादा कैजुअली। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज आर्टिस्ट समटाइम्स आर सेंसिटिव अबाउट देयर आर्ट, यू नो, सो यू कांट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट स्पेस एंड यू कांट जस्ट से एनीथिंग कि नहीं यार ये क्या बना दिया और समथिंग लाइक दैट, यू नो। देयर आर सम, there's a, you have to choose your words, Good choice of carefully. words. Good choice of words, and आपको you have to try, you know, to try to avoid being harsh, for example. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आप क्या बोल रहे हो। बट मैं कोशिश करता हूँ कि ऑनेस्टली जो मेरी फीलिंग्स हैं आर्टिस्ट के म्यूजिक के बारे, वो मैं आई ट्राई टू कन्वे इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो दैट they get what I'm trying to say without it pinching them, you know, without them feeling bad कि यार ये क्या बोल रहे हैं मेरे गाने के बारे। so वो बैलेंस इतना आसान नहीं होता है बट ज़रूरी है बहुत। हाँ, मतलब आपने अपनी बात कह भी दी और बिना किसी को हर्ट करे वो बात पहुंच भी गई। हाँ, मतलब वो ज़रूरी है और आपको ध्यान रख के बोलना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा था, इट्स देयर आर्ट, इट्स देयर वर्क, सो यू कांट जस्ट say just anything about it, you know. पाजी, अभी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप एल्बम, काफ़ी ज़्यादा मच अवेटेड हिप हॉप एल्बम कर्म बाय कश्मीर, वो कल रिलीज होने वाली है। हाँ जी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उससे बनने में, थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताओ, इतना टाइम क्यों लगा? ऐसी जो प्रोड्यूसर एल्बम्स होती हैं हमेशा बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज आप इतने डिफरेंट तरीके के आर्टिस्ट के साथ डील कर रहे हो और इतनी अलग अलग तरीके की साउंड्स हैं, फिर सबको इकट्ठे करना, एग्रीमेंट साइन करवाना। यू कांट पुट दिस एल्बम, दिस काइंड ऑफ एन एल्बम विदाउट गेटिंग ऑल एग्रीमेंट्स डन एंड साइन, फॉर एग्जांपल। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें हमेशा टाइम लगता है एंड पॉलिटिक्स होती हैं, ईगो होती है, किसका वर्स पहले आना चाहिए, किसका वर्स बाद में आना चाहिए। ऑल दैट इज दैट ऑलवेज leads to more time being consumed in the making of the album. And होता है क्या है कि basic structure skeleton album का बन जाता है, फिर उसके बाद आपको महीने लग जाते हैं to fine tune it and एक और चीज़ क्या होती है कि at some point of time क्या होता है कि आपने एक आर्टिस्ट के साथ आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब 8 महीने लग गए to finish all the songs, अब वो आर्टिस्ट कहता है I don't like that song anymore, I don't want to do it. You know, sometimes they're just in a different phase of life or creativity, or they just don't want to do that song anymore. हाँ, ये मैच नहीं कर रहा, मेरे आपका साउंड काफ़ी चेंज हो गया है, ये बहुत पुराना है, इस जोन में मैं नहीं हूँ, अब उसको स्क्रैप करो, अब दूसरा रिकॉर्ड करना है कि नहीं, उसको कन्विंस करो यार अच्छा दूसरा रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेरे पास और बीट्स हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, इसमें हमेशा ऐसी जो एल्बम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट्स इन्वॉल्व हैं, इट ऑलवेज हिस्टोरिकली स्पीकिंग, इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जितनी भी एल्बम्स होती हैं, Metro Boomin albums और Mike Will Made It और DJ Khaled albums, ये सारी albums हमेशा प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है हमेशा, बिकॉज इतने आप अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो और कोई भी अगर छोटा सा भी चेंज होता है और उसमें एक गाने में 3 आर्टिस्ट हैं, आपने एक सेक्शन चेंज कर दिया, अब आपको उन तीनों आर्टिस्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि अच्छा आर यू ओके विद दिस, तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम्हें ठीक लग रहा है, तभी वो तभी फाइनल मिक्स एंड मास्टर होगा एंड फाइनलाइज होगा सॉन्ग। सो इट्स जस्ट व्हाट इट इज, बट द एल्बम इज इनक्रेडिबल, इट्स एन अमेजिंग एल्बम। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट Niles Kashmir has done, and obviously he had the basic idea, and then we at Masterpiece then came in and helped finish it and fine tune it a little bit, and whatever help he needed we provided to to make it the best product possible. ग्रेट। मैंने इंटरव्यू भी किया था कश्मीर का, तो उन्होंने बताया भी था कि पूरा एक स्टोरी है, स्टोरी के पार्ट से फिर यहाँ पर ये आर्टिस्ट का गाना है, इस आर्टिस्ट का गाना, तो उन्होंने बताया था पूरा। नाउ यू आर फाइनली सुपर एक्साइटेड एंड रिलीफ कि भाई एल्बम आ रही है। बिल्कुल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ग्रेट। एंड उसमें इतने अलग अलग तरीके के साउंड्स हैं, there's a song, a Malayali song also now, there's a Punjabi song, so we wanted to cover as much as possible because Desi hip hop is just not like Hindi hip hop, you know, it's like, and Desi culture is not just one language, different languages, different cultures, different backgrounds. We wanted to like cover as much as possible because obviously सारा कुछ
अगर आप एक में कवर आप करोगे तो फिर एल्बम 1 साल और डिले हो जाएगी बट जितना हो सकता है यू नो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड कीपिंग timelines and business and all that in mind I think we've been able to do the whole entire team it's a team effort. We've been able to do a good job and I think the fans are going to really enjoy the album. It's the whole sound, the soundscape, the story. It's not like just a compilation album के 7 8 10 गाने बस बना के उसको bunch में डाल दिया. You know, it's not like a compilation. It's a whole story. Yeah. And just Kashmir is obviously known for his expansive sound and कितनी detailed उनकी sounds होती हैं. Yes. Mixes इतने fine होते हैं. You can hear different instruments in the same layer. It's just incredible. और बहुत अच्छा लगेगा fans को पक्का. Great, you know, Paji, all the best. Album Thank you. G-Far तरीके से hit हो. Yes. That's जो मैं बोलता हूँ. Yes. Which is your super favorite song from the album? This is a very Tell me. This is a very difficult question. I love Legacy with Raftaar, which is already out. I think we got a classic Raftaar sound and flow on that. There's a song by The Prophecy and Tala Anjum, which is amazing. That's one of my favorites. I play that very regularly. वो काफी टाइम से मेरे पास है, but मैं उसको बहुत play करता हूँ. I love that song. Punjabi song with the verse by Tala. Again, just the way the two artists have come together. It's an amazing song and two great artists. Of course, and what I believe. Absolutely, and then you know Raja Kumari, Yash Raj, Yar Saab. That's an incredible song. So there's a bunch of. I definitely have like 5, 6 favorites. I love the entire album, but obviously if I had to choose, there's like 5 or 6 songs that I really like. Great. And सबसे ज़्यादा you know toughest collaboration कौन सा था जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया? नहीं, ऐसा एक honestly particular कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से एक particular artist या collab की वजह से delay हुआ क्या था कि so there's again as I was saying because Niles started making this album a year and a half ago. वहाँ से फिर 2-3 cases ऐसे हुए कि the artist said we are not in this space anymore and we don't connect with this song anymore. तो हम कोई और record कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं. तो वो उतना फिर time नहीं होता है उसको record करना. You know, Niles यहाँ पे नहीं रहते हैं, LA में रहते हैं, तो उनका यहाँ बार-बार आना भी मुश्किल होता है. And आप सब कुछ remotely नहीं करना चाहते हो. You want to be together and work. Because this kind of an album इतने expansive, detailed sounds हैं. आप सब कुछ ईमेल पे नहीं कर सकते. You want to be sometimes you want to be together and be working on the album. तो ऐसा एक पर्टिकुलर नहीं था, बट ऐसे केसेस थे कि एक आर्टिस्ट कहता है कि यार नहीं मैं अब इस फेज़ में नहीं हूँ, मैं दूसरा गाना करना चाहता हूँ, या फिर दूसरा आर्टिस्ट कहता है कि दिस इज़ अनदर केस के मेरी EP आ रही है या मेरा सॉन्ग आ रहा है उसके साथ क्लैश हो रहा है. सो आई एंड दैट साउंड इज सो डिफरेंट फ्रॉम my own release. तो इसको हम स्पेस आउट कर सकते हैं. Things regular things. दिक्कतें बहुत सारी आई. ये ऐसी एल्बम्स में हमेशा बहुत टाइम लगता है. I mean रेगुलर एल्बम्स में इतना टाइम लगता है, तो ये तो इतने सारे आप you know I don't know the number, but it's like at least that are on the album. So टाइम लगता है हमेशा ऐसे. मतलब अगर आप you know इंडिया की या हिप हॉप सीन की वन ऑफ द बिगेस्ट एल्बम बना रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही. बिल्कुल. But when it's out, people are going to definitely just love the sound. It's such a incredible. I think it's never been done this before, like in this manner, in a storied manner, and also the sounds when you hear it, whole thing top to bottom. जो कश्मीर के जो sounds हैं और जो mixing है और आपको इतनी layers सुनाई देती हैं, it's remarkable. Great, you know, I'm super excited. कल finally album release हो रहा है तो फिर सुनेंगे. Yes. अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि you know you are working with the artist on an EP और album? हाँ जी. तो आपने बोला कि पाजी ये ना ये सॉन्ग इसको मत डालो, आर्टिस्ट ने हाँ बोल दिया, फिर बाद में जब एल्बम रिलीज हुई तो देखा अरे तो ट्रैक है इसमें. कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? होता ही रहता है ऐसे काफ़ी, बट ज़रूर हुआ है. एंड आप अपने तरीके से कोशिश करते हो कि यार ये गाना क्यों इतना अच्छा नहीं है, क्यों इसको इतना अच्छा क्यों लग रहा है यार, इतना नहीं अच्छा. समटाइम्स यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि यार इट्स नॉट अ गुड सॉन्ग एंड यू ट्राई योर बेस्ट कि यार इसको मत डालो इस एल्बम में या मत इंक्लूड करो, कट कर दो. बट फिर भी यू नो एंड
हुआ है ऐसा। पर आप उस टाइम पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि यार मैं चाहता हूँ किसी एल्बम, इफ यू आर वर्किंग ऑन द एल्बम की भाई ग्रेट हो, बिल्कुल उसमें अगर 10 गाने तो 10 सारे ऐसे साउंड करे कि लोग पागल हो जाएं, लोग मजा आए। वो थोड़ी मुश्किल चीज़ होती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको अगेन एज आई सेड आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं थोड़े से अपनी आर्ट के बारे, एंड राइटफुली सो, उनका आर्ट है, उनका काम है, तो आप ऐसे हार्श तरीके से नहीं बोल सकते। यू ट्राई योर बेस्ट कि यार उसको उनको कन्वे करने के लिए कि इतना अच्छा ये गाना नहीं है, एट पार नहीं है विद सम ऑफ द अदर सॉन्ग्स ऑन द एल्बम, सो यू ट्राई योर बेस्ट टू कन्वे, टू कम्युनिकेट, बट नहीं बनती कई बारी बात, एंड समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी लाइक चलो ठीक है, आई मीन यू गॉट 9 सॉन्ग्स व्हिच आर योर टेस्ट एंड जो आपको पसंद है, एक गाना ऐसा है जो आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद है पर हमें नहीं है, कोई बात नहीं। अब these are compromises that you have to make in the industry, so it's not कुछ नहीं you have to like, हाँ कुछ नहीं कर सकते, you have to just go with the flow and but hope that you're wrong and the song still does well. बट जब आप हो गया 6-7 महीने हाँ जी, बीत गए, एल्बम रिलीज हुई, अब आप नंबर्स चेक करो स्ट्रीमिंग में, ठीक है, उसमें जो सॉन्ग आप बोल रहे थे कि मैं नहीं चाहता था ये हो, उसमें अगर सबसे ज्यादा कम स्ट्रीमिंग हो या कभी और उसमें ज्यादा, तो उस टाइम पे क्या ये आप वो बात कनेक्ट कर रहे हो, वो जो मैं ऑफ कैमरा बता रहा था, वो बात मेरे से निकालने की कोशिश कर रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ मतलब हाँ वेरी ऑनेस्टली समझ गया बट नहीं ऐसा, सो अगेन ऐसा हुआ है वेयर यस आई न्यू दैट सॉन्ग इज नॉट द वन and it ended up being the lowest streaming song on the album. This has happened and it happened recently, but again it's not, बाद में कुछ डिस्कशन होता है उस पे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आर्टिस्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं, क्यों ऐसे आप you don't want to go to the artist कि देखा मैंने बोला था ना, हाँ ये नहीं चलेगा, ये ट्रैक फ्लॉप हो गया गाना, ऐसे नहीं, ऐसे वो ठीक नहीं होती है बात करनी। You just it's almost like a validation in your own self कि okay yes okay I was right. You don't announce it to the world like look I was right. It's just think okay that this was your gut feeling and this was your taste and it aligned with the commercial value as well, that okay people didn't like, and again I am not right all the time. बहुत बारी ऐसे हुआ है कि मैं कहता हूँ यार ये क्या गाना है and that ends up being everything is not your taste, some songs are not your taste, but there may be I may not like it and 19 other people may not like it, but 80 more people may like it out of 100. बहुत बारी ऐसे होता है, so it's just one of those things, but in this case yes, because this in this जो मैं example दे रहा हूँ, इस album में क्योंकि involved था and मैं I knew what the music is, what the sonics are, so I was confident that song is it's probably not that artist's best, but they still included, but it's okay. I mean it's not like you're not going to go to the artist, देखा मैंने बोला था ना नहीं चलेगा देख ऐसे। हाँ मतलब वो ठीक, हाँ मतलब हो गया चलो ठीक है, हो गया आगे बढ़ो, बात नहीं, हाँ ठीक है, गॉट इट। यस। अच्छा ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कैसे होती है, अब जैसे डिवाइन भाई के एल्बम में हाँ जी थे बहुत सारे इंटरनेशनल फीचर्स, कैसे होती है? सो डिवाइन की एल्बम में अरमानी 3 फीचर्स थे, अरमानी वाइट, रस एंड जेडाकिस, and again teamwork होता है, it's yes I was personally involved with few of them, but again it's at the end of the day it's teamwork, and I also for example if it's a Russ feature, अगर डिवाइन की जगह और होता तो रस ना करता फीचर। ये नहीं है कि मैं क्योंकि मेरा अच्छा रिलेशनशिप है रस के साथ और मैं रस को बोल रहा हूँ ये तूने गाना करना है, वो इसलिए कर रहा है, वो that is part of the reason but not the entire reason. He's also doing the song because that's Divine on the other side and he likes the song, so obviously Divine shared the song with Russ and then Russ discussed it with me and I said yes let's go, like this is a great idea and I'll help you with it, and so I helped in that process, but it mainly happened because it's a Divine song performed by Divine which Russ liked, and again like Armani White, it was Bazigar was an idea that was sitting in the studio and we came up with I was like let's get Armani, actually it was Divine's idea. Divine asked me like like you have a relationship with Armani would be nice on this. I'm like oh yes, Armani would be great on this song. So I had a relationship with him, I reached out and he instantly loved it and I helped him tell him what the song is about and kya feel है, try to explain to him who Divine is, what the song means, what is it about and how big the song can be. तो वो सारा process फिर मैं
आप हेल्प करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स टीम वर्क. Yeah. बट इट्स ऑल्सो many फैक्टर्स. ये नहीं होता है कि हाँ आप सिर्फ पैसे दे दिए वर्स के तो वो गाना कर लेगा. इट्स मच मोर देन दैट. बट हाँ वही मेरा होता है कि अप्रोच कैसे. वही है. सो काफ़ी चीज़ें होती है. अगेन सम आर्टिस्ट डोंट मूव अंटिल सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज ऑफर्ड, यू नो. सो फॉर एग्जांपल किसी का मेरे पास गाना है तो मैं जा रहा हूँ एक आर्टिस्ट के पास एंड मैं उसको बोलता हूँ यार दिस सॉन्ग, यू नो, वी आर लुकिंग फॉर अ फीचर एंड आई थिंक यूर अ गुड फिट. दे माइट से ओके वी लाइक द सॉन्ग बट दिस इज माई फी. नाउ एट सम पॉइंट व्हाट हैपेंस इज दैट आपके साथ क्योंकि आपका उनका अच्छा रिलेशनशिप है तो आप फी को रिड्यूस करवा सकते हो बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप. कि हाँ ओके $50,000 मांग रहा है तो आपका रिलेशनशिप है तो हमने कहा यार can we do it in 25 or 30, you know, this is a lot of money upfront to pay and you know all of that. So kay artists they don't move without money, but relationships are important. All of this is, you know, आप सिर्फ randomly किसी को आप approach करोगे तो उससे collaboration निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, even if you pay whatever the artist is asking for. बिकॉज बिकॉज ऑब्वियसली जो फीचर्स होते हैं आप ज़्यादातर बड़े आर्टिस्ट के साथ ही करना चाहते हो, यू नो UK US व्हाटएवर वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ. एंड वो हर चीज़ देखते हैं. वो साउंड देखेंगे, उनकी वाइब मैच हो रही है कि नहीं, उनकी साउंड उस पर मैच हो रही है कि नहीं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं गाने के, कितनी मार्केटिंग पुश मिलेगा गाने को, व्हाट विल दे गेन आउट ऑफ इट, विल दे गेन सम साउथ एशियन फैंस आउट ऑफ इट, थिंग्स लाइक दैट. बट मुश्किल होता है honestly. It's not easy. Also because I still feel, and over the years this has improved, but a lot of the American artists still are not very aware of what's happening in say South Asia, India, what's happening, how big a market South Asia is, how big a market for example China in its own self is. A lot of artists don't even know कि चाइना में फेसबुक इंस्टाग्राम ही नहीं है या स्पॉटिफाई ही नहीं है, यू नो, पता ही नहीं होता है उनको. आर्टिस्ट को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जिस पे उनके मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स आ रहे हैं पर उनके पास वो डेटा ही नहीं है. तो उनको पता ही नहीं होता कि मेरे फैंस चाइना में, जो मेरे फैंस इतने सारे फैंस हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे चाइना में इतने फैंस हैं बिकॉज मेरे पास वो डेटा ही नहीं है मेरे सामने. सो ये वेस्टर्न आर्टिस्ट अभी भी उतने ज़्यादा, अभी काफ़ी इम्प्रूव हुई है. आई थिंक ओवर द लास्ट 5-7 years I've started noticing. बट मैं पहले जब कॉन्वर्सेशंस करता था एंड आई वुड लाइक टेक आइडियाज़ फ्रॉम सम इंडियन आर्टिस्ट के यार दिस वुड बी अ ग्रेट कोलैब, वो बिल्कुल कंफ्यूज होते थे कि यार ये आर्टिस्ट कौन है और ये कैसी साउंड है. अब क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट ग्लोबल लेवल पे करना, अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर गए हैं, चार्ट्स पे चार्ट करते हैं, ग्लोबल चार्ट्स पे चार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से एंड ऑल्सो because global music economy इतनी open हो गई है, India is one of the fastest growing music economies in the world, वो सब की वजह से executives, artists सब थोड़े aware हो रहे हैं. तो अभी क्या है कि अब right now it's easier to approach somebody for a feature than it used to be say 7-8 years ago. You know, थोड़े chances, मतलब it's all about probability अब बढ़ती जाएगी आगे जाके of having collaborations, interesting collaborations between Western and South Asian artists. Okay. From PR to A&R. Yeah. काफी काम आया इन collaboration में. बिल्कुल, and that's always a very exciting process. Even now I'm, you know, in talking terms with getting a couple of things done, which is very exciting. वो process बहुत exciting होता है. यही कमाया ना, यही तो कई बार काम करता है. हाँ, कई बार it goes through, sometimes it does not, but you always try to make interesting things happen, you know. ग्रेट. एक चीज़ मेरे को जाननी है, मैं जब भी आर्टिस्ट की एल्बम या कोई भी बड़ा उसकी लाइफ का बड़ा सॉन्ग है, EP एल्बम है, तो जैसे प्रमोशंस होते हैं, अब जैसे टाइम स्क्वायर पे हाँ जी लगते हैं, फिर कई वीडियोस आए उसके कि भाई अगर आप भी अपने वीडियो लगा सकते हो, अगर आपके पास एक सफिशिएंट एक अमाउंट है, एक मिनिमम अमाउंट आपको इतना पे करना पड़ेगा, आप लगा लोगे. तो पहले जब पता नहीं था लोगों को, तो जब प्रमोशन होते थे आर्टिस्टों के, एल्बम के लग रहे हैं, गाने के लग रहे हैं, तो एक अचीवमेंट था कि तेरा भाई टाइम स्क्वायर पहुंच गया, तेरा भाई यहाँ पहुंच गया. फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू खुल गई कि भाई आप भी लगा सकते हो. बिल्कुल. तो व्हाट डू यू हैव टू से? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाँ. So
जो कई बिलबोर्ड्स होते हैं टाइम स्क्वायर एंड टाइम स्क्वायर के आसपास 42nd स्ट्रीट पे है कई, वो कई पेड होते हैं, मतलब आप इट्स जस्ट लाइक एन ऐड, जैसे यहाँ पे आप ऐड लगा रहे हो वहाँ पे वही ऐड है, आप यू पे फ्यू $100, आपको फ्यू मिनट्स इन अ डे मिल जाते हैं स्पॉट्स, फिर आप उसको वो दैट्स गुड फॉर सोशल मीडिया। यस बट लाइक सम ऑफ द बिगर बिलबोर्ड फॉर एग्जांपल जैसे स्पॉटिफाई का बिलबोर्ड है टाइम स्क्वायर में, वो यू कांट पे मनी फॉर दैट कम्स थ्रू यू नो एंड अदर बिलबोर्ड्स आल्सो, यूट्यूब का बिलबोर्ड हो या एप्पल म्यूजिक का हो, दैट the DSP you know organizes that, and they have to have that trust and belief in that artist कि हाँ he or she is big enough for their platform and relevant enough for that platform. Sometimes they do like small campaigns also, कोई women centric campaign होता है या कुछ होता है, ऐसे equal campaign है for example Spotify का, so उसमें obviously there's nothing big or small, but वो जो है वो आप there's no money for that. हाँ, that the DSP, the streaming service does that on their own, whatever the campaign is. If it's a new Music Friday campaign, if they think okay this you know this kind of this artist releasing on this Friday is you know deserves to be on that billboard because it's a big enough release, so they go for that. So that's mainly, you know, some things are not money driven. हाँ, क्योंकि मेरे को ना, मैंने वो जो मनी वाले हैं मैंने वो देखा था, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे विश किया था, तो मैंने देखा ये तो सेम वही यू नो जगह है, सेम वही है जहाँ थोड़े दिन पहले किसी एक आर्टिस्ट का गाना लगा हुआ था। बिल्कुल तो मैं बोले तो गर्लफ्रेंड को विश कर रहा है। नहीं, पर अच्छा होता है वो, दैट्स आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग। हाँ, टू बी ऑनेस्ट इट्स गुड, लाइक यू जस्ट क्रिएटिंग मोर हाइप एंड बज़ फॉर योर प्रोजेक्ट। आप उस बिलबोर्ड पे आप ऐड लगाओ और सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करो, इट्स अ गुड थिंग। आई मीन देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। मैं भी लगाऊंगा। एड्स तो आप पैसे दे के ऐड होते हैं, उसमें कोई छुपाने वाली तो बात नहीं है। अब ऐड है तो ऑब्वियसली फ्री में थोड़ी वो देंगे आपको स्पेस, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर इट। सो सही है, मैं भी लगाऊंगा सब्सक्राइब टू रैंक जोन्स। स्मार्ट मार्केटिंग मूव, यू शुड डू इट इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड इफ यू हैव द कैपेबिलिटी एंड द कनेक्शन टू गेट दैट बिलबोर्ड। करना चाहिए। हां, अगर पैसा है उतना, बिल्कुल आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली, और आप ही का प्रोडक्ट है वो जो और बड़ा बनेगा। आप यू स्प्रेडिंग द वर्ड्स ऑन, यू शुड डू इट। अच्छा, ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट देसी हिप हॉप सीन को कैसे देखते हैं? मतलब कभी वहां से खुद अप्रोच आपको कभी आया हो कि यार मेरे को ना कौन अभी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 रैपर, मुझे इसके साथ कोलैब करना है, ऐसा कभी कुछ? हाँ जी, आया वही मैं कह रहा था, लास्ट 5-7 ईयर्स में सिचुएशन काफ़ी चेंज हुई है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे होता था कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट ही बोल रहा है कि मुझे इसके साथ करना है। अब वो होने लग गया, बिकॉज अगेन क्योंकि आप रैंक कर रहे हो ग्लोबल चार्ट्स में, या आप यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आ रहे हो, ग्लोबल ट्रेंडिंग में आ रहे हो, एंड पीपल ऑब्वियसली आर लुकिंग अप दो स्टैट्स एंड दे लाइक ओ व्हाट इज दिस। सो ऑब्वियसली ज़्यादा अवेयरनेस फिर स्प्रेड होती है, you know, in the music community, in the overall music community, so people find out about all these things, and कोई गाना ट्रेंड कर रहा है on social, on reels or TikTok or whatever, and if it's an Indian song, obviously they get intrigued कि ये क्या है। तो उसकी वजह से, because the global economy is expanding and becoming smaller and smaller, the world is becoming smaller, and India is such a fast growing music economy. Because of that, artists are now getting more and more aware कि क्या Indian artists कौन हैं, देसी artists, South Asian artists। तो मुझे इनफैक्ट लास्ट मंथ ही किसी बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने मुझे टेक्स्ट किया, SMS मैसेज किया कि you know, what do you think about this artist? He seems very interesting. I would love to do something with him. Like, yeah, this is a great idea. If you can tell. Oh, it's not my, again, it's not nothing for that, but it's not my place to say that out of respect for the artist. So, but a very nice, very good artist, very well respected artist, they approached me and they said, you know, what do you think of this idea? And I said, yeah, I can, you know, this artist is not with my label, but I am in touch with them. I can put you in touch, and you know, it'll be great to facilitate something like that. No issues. But अब वो cases अब हो रहे हैं increase, definitely. That's great, you know, scene के लिए भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। आगे जाके बढ़ते रहेंगे, collaborations ज़रूर होती रहेंगी, and I'm very sure one of those collaborations will be super big on, you know, in the world frame, not just for South Asia or India, but overall global charts में and world hip hop global में बहुत अच्छा करेगा। I'm pretty sure that will happen very soon. Great, मैं भी ये चाहता कि you know
ऐसी कोलैबोरेशंस और हो. बिल्कुल होगा. Whether it's hip hop or non hip hop, whether it's in the pop lane, but I'm pretty sure something very big things will keep happening for sure. I'm very confident Okay, the way we are going. that's great. पाजी एक सॉन्ग है चोरनी, मुझे उसकी लेगेसी के बारे में बात करना. What a special song. उसमें सैम्पलिंग लता मंगेशकर हाँ जी. जी का, सिद्धू मूसेवाला, Yes. ठीक है, एंड डिवाइन भाई. Yes, rest in peace to Sidhu Moosewala, first of all. What an incredible artist. उसका again, I'll keep it in brief because the story इतनी लंबी है क्योंकि how it came about and so yeah, so that basically that sample was my idea. Okay. I had that song and I found some really interesting songs. So मैंने अपने two producers who I work closely with, Drugs Beats and Mex Many, the two producers of the song. So I've been working with Drugs for almost 10 years. I actually put out his beat tape, which ultimately then landed in the hands of Aftermath and Dr. Dre, and then he ended up producing a song for Dr. Dre and Kendrick Lamar on Compton, the Compton album. So मैं तब से उसको जानता हूँ. So he's a sample specialist. When I say sample specialist, he just knows how to chop samples and make interesting sounds out of it in a very, very hip hop way. So I thought that he would be able to do a really good job with these certain songs that I had access to from this Hindustan Records catalog. I was like, okay, because they told me, okay, anything that you sample, we'll be able to clear it for you easily, and there won't be a problem as long as the business is right. So I took that idea to Drugs and Mex. I'm like, this song and these kind of components of the song, this sounds like a great idea. So just make something and send it back to me. They sent something to me, and that batch had 3 or 4 beats. Okay. And उसमें से फिर ये वाली, उसमें एक और बीट थी जो एक बहुत बड़े अमेरिकन आर्टिस्ट को भी बहुत अच्छी लगी थी. Another beat in that batch, and she did not end up using that. I mean, I'm still hoping she just might someday, but this beat Divine loved. Again, जब उसने मुझे बना के भेजी थी, I suggested some changes, a little bit changes to the beat, and then they restructured and sent it to me. I shared it with Divine. He really liked it, but he didn't tell me that he loves this beat. So I had sent him a batch of beats when he was working on Gunegar. Yeah. Because he's like, I was helping him in A&R capacity. So, and this is actually before my gig at Mass Appeal, so I was already helping him with his album. So he loved the beat, and they were in the studio, Sidhu and Divine. Divine played for Sidhu, and Sidhu instantly is like, this beat is crazy. So again, Sidhu being Sidhu, he wrote it very fast, completed the song, and I met Divine actually literally like an hour or so after they recorded, because I was waiting at the hotel. Okay. And Divine had done the session. तो वो session करके आए hotel, मैं hotel में मिला, and Divine said, I want to play something for you. So he played it, and when I first heard the song and Sidhu's verse came through the speakers, first goosebumps. I was like, this is crazy. So that's how the song came about. And then after that, obviously, we wanted to do like a big single launch for this, and first single from the album, and do a big thing with it. But obviously, unfortunately, Sidhu passed away, and फिर उसके बाद, of course, the family had to clear the song, and फिर वो सारा process था. And initially, though, Divine, obviously, was just not in the mood to even touch the song because he was so taken aback and so heartbroken because Divine का इतना अच्छा relationship था सिद्धू के साथ. Yes. So he was so heartbroken by the incident and by his death. तो पहले तो हमने गाना उसको छेड़ा ही नहीं, हमने साइड पे रख दिया कि we'll revisit and we'll see. Like obviously you can't go to the family 2 weeks later के गाना clear कर दो. वो खुद इतना they're mourning the loss of their son. तो फिर बाद में then we revisited, and the family knew के Sidhu loved this song and he would have loved to have this released out to the public. तो बस फिर हमने धीरे धीरे दोबारा काम करना शुरू किया, एंड फिर डिवाइन थोड़ा सा चेंजेस चाहते थे करना सॉन्ग अपने वर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली जो पहला वर्स था वो थोड़ा सा वो मैच नहीं कर रहा था इन वेक ऑफ हिज डेथ. सो
that's why he wanted to change something because he was feeling odd कि वो ऐसी कुछ चीज़ें बोल रहा है और Sidhu has passed away, so you know he was not feeling right about it, and he wanted to make sure that he respects his legacy and respects the song, such a great piece of art that he's given to the world. So बस करते करते, and then you know how it is when you release a song, people were like, oh, you changed the beat, क्योंकि जब उन्होंने original प्ले किया था आई थिंक कॉन्सर्ट पे, sorry, but yeah, जब वो original जो play किया था, it was different. Not different in the, not like the the core of the beat wasn't changed, but there were a few changes. And most of those changes were relating to actually the mix and mastering thing, and this how the mix was placed, and some drums were changed, and एक दो snares उसको हमने कम कर दिया था, but fans had a very strong reaction to it. क्योंकि ऐसे ही होता है, आप एक बार कुछ preview कर दो song, you get so attached to that version, आपको फिर वही version चाहिए. वो हमारे साथ भी होता है, you know, when we, जब हम अपने favorite artists के गाने सुनते हैं, and ये all these artists like Kanye के साथ कितनी बारी होता है कि वो कुछ sample के साथ कुछ play कर देता है और वो बाद में sample create नहीं होता है, and then fans कहते हैं हमें वही version चाहिए, और जब version आती है तो वो उसको यहाँ तो sample change हो जाता है और निकाल देता है, and then fans get mad. So it's the same thing. So fans इतने attach हो गए थे with that preview. Then we took that call, and Divine being Divine, people's champ, he's like, fans want the old version back. So, you know, he called me and he's like, Navjosh, isko yaar, fans kya karna chahiye? मैं कहा, it's entirely your call, but the fans seem disappointed, so let's give them what they want. And he's like, हाँ यार, ये करना चाहिए. You know, I can't disrespect fans like that and Sidhu's fans like that. So we whole night, entire that day, 20-hour work day is such a stressful time, but we sat on it, and you know, I got Max Manny and Drugs on board from the US. We sat on a video call and we finished the song, and you know, I'm so blessed to have that opportunity to be working on a Divine and Sidhu collaboration as an A&R, and I've, you know, helped with the production, so that's a blessing. It doesn't get bigger than that. Yes, that's why मैंने बोला ना कि वो song उसकी legacy अब, बिल्कुल, उसकी legacy इतनी बड़ी है कि you know पूरी दुनिया में grateful and honored that you know that Divine and Sidhu had that trust in me to. उनको बहुत special bond भी था. बिल्कुल, उन दोनों के बीच में इतना अच्छा relationship था, and Sidhu, you know, instantly loved the beat, and it's such a special beat, and I always knew that it's a very special beat which deserves to be released in a special manner, you know, with special artists. So Yes. I'm glad it worked out. People will, you know, आगे की generation आएगी वो भी सुनेंगे, they will love our I legacy. think it's one of Sidhu's best verses, just the way he comes in, and it's just incredible. What an incredible artist. I agree with you. बिल्कुल. बाकी मेरे को बताओ, आप थे ग्रैमी अवार्ड्स में, आपकी डीपी भी हुई है अभी तक, है ना, क्योंकि बहुत ही ग्रैंड एक्सपीरियंस होगा आपका वहाँ पर. डिवाइन भाई थे, न्यास भाई थे, चैतन्य भाई भी थे. कैसे हुआ, मतलब सब बताओ जरा. So actually, उनका वहाँ होना और मेरा वहाँ होना was not really connected. वो by chance हो गया because I became a member of the Grammys the year before that, और जो वो वाला था वो cancel हो गया था, उन्होंने सिर्फ virtual किया था. So this was the one after that, and it had always been a dream कि मैंने Grammy Awards attend करना है. And काफी लोगों को नहीं पता होगा कि आप अब वैसे अवार्ड्स सेरेमनी आप वैसे अटेंड नहीं कर सकते. You have to be either a nominee or a member. So we also have to buy a ticket, but the tickets are offered only to members. Non-members आप guest लेके जा सकते हो, एक guest usually एक ही allowed होता है. So मैं किसी को साथ लेके जा सकता हूँ, but I have to purchase tickets, but only members can purchase tickets. So मेरा ये था कि अगर awards करने हैं तो Grammy member बनना पड़ेगा, और मैं वैसे भी I always wanted to be a part of that process and cut that sort of, you know, boundary and you know, set an example like this can also happen, like you know, if you do work, and no matter where you are in the world, if you do good work and you trust in yourself and your work, you can do all of this as well. Yes. So फिर वो मैं Grammy Awards attend कर रहा था, and then obviously Nas was nominated that year,
and he won the year prior, and he was nominated that year again for Rap Album of the Year. So obviously फिर वो Divine के साथ plan बन गया कि Divine will also come and he will be featured as Nas's guest. And फिर the amazing thing that happened was that just before one night before the Grammys in Vegas, Nas had a private party to celebrate last year's win and this year's nomination. Just like 50 people, some close partners of Master P and his family and friends. So it was like Divine and me and obviously Chaitanya and just like Hit Boy and 30-40 more people. It was really nice party, and then followed by the Grammy Awards, and it was a great experience attending with them क्योंकि उनका भी first time था और मेरा भी first time था. वो Nas और Peter के guest थे. It was a great experience for Divine, I remember, and मेरे लिए भी it was my first time, and it's just great to be just in that atmosphere. You feel like you're in the center of the world, the music world, and it's just it's a humbling experience, but also a proud moment. Like you feel like, okay, you've done some work which has helped you land here. So it's a great feeling. But I would love to be a part of that process, because when you're part of that process, you can take, वही मैं जानना कि बिल्कुल as a member of बिल्कुल आप उसका एक्चुअली क्या होता है ना कि आप बहुत लोगों को कंप्लेन करते हो देखते हो. मैं जब भी नॉमिनेशन अनाउंस होते हैं या जब विनर्स अनाउंस होते हैं, तो हिप हॉप कम्युनिटी in America is always very disappointed. You can never, again, सब लोगों को आप एक ही बार खुश नहीं कर सकते. But usually जो hip hop nominees होते हैं उसको बहुत reactions आते हैं कि like this album didn't deserve it, like Macklemore ended up winning ahead of Kendrick Lamar. So वैसे reactions भी बहुत आते हैं. So उससे फिर मुझे लगा कि अच्छा अगर मैं let me see how to become a member. That was actually an inspiration. How do you become a member and take part in the voting process and submission process? तो फिर मुझे लगा कि I'm eligible to apply, and you never know, मैं क्या पता मुझे accept कर लेंगे और मैं हो गया. So जितने ज़्यादा हिप हॉप कम्युनिटी से कल्चर से मेंबर्स होंगे उतना ज़्यादा हम सेटिस्फाई होंगे नॉमिनेशन और अवार्ड से, because then we will be submitting the right music and voting on the right music, because as everybody knows, it's a peer voted, it's the only peer voted award. So your peers in the industry, musicians, they vote on the music which has been submitted. So it's not like जो सबसे ज़्यादा stream हो रहा है उसको दे दिया या 10 options थे जो अच्छा लगा, it's a peer awarded show, and I wanted to be a part of that process. So it's great being a part of that community. Great. I think मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा वो था आपके लिए कि यार बहुत टाइम से आप भी एक बार तो देखना ही देखना है. Honestly very big. Just being a part of the Grammys was very big for me, because I remember when I got the email that I have been accepted, I jumped out of my seat. I still remember I felt I felt emotional. I'm like, this is crazy, because I wasn't actually expecting it, to be honest. I had like okay, maybe there's like a 30% chance कि शायद कर देंगे accept. मैंने कहा पता नहीं मेरे जैसे वो प्रोफाइल होगा कि नहीं. And again, there are two kinds of membership, professional and voting. So I'm a professional member, so I can submit music to be considered for Grammys, but I can't vote on it. Okay. But even that submission process is something very privileged, and I'm honored that I have that privilege, that I can submit music for the Grammys. As I have more, my work built up and my credits built up, I'll be able to apply for my voting membership as well, and hopefully I can be a voting member. Fingers crossed, I can be a voting member one day as well. So the only difference is that you can't vote between a voting and a professional member. All other duties and rights and perks, they all remain the same otherwise. But if I can do it, there's so many others who can do it as well. That's that's I think the best thing out of it. If another person can get inspired from it, and they end up applying and they end up becoming a member. Somebody from India, from our community, they see these stories. That's a great, it's a great feeling. मतलब कि इंडिया से भी बिल्कुल फ्यूचर में लोग कर सकते हैं. Yes. Tell me the craziest experience किसी आर्टिस्ट के साथ.
अच्छा crazy experience. इंडिया का ले लेते हैं या बाहर का? It's, आप भी shock हो गए। is you know this जो मैं काम करता हूँ 15 साल से कर रहा हूँ हाँ। बहुत I'm very fortunate I've got to experience so many crazy and emotional moments in this entire journey, but very hard to like name. But yeah, I think a couple of them. One was obviously meeting 50 Cent in his office Yes. because I had a relationship. I was always again 50 is one of my favorites, and part of the reason why I got so heavy being involved in hip hop as it is for many South Asians. That whole G Unit aftermath, Shady Records era. Yeah. But meeting 50 was an incredible moment. It was almost like a brain freeze kind of moment because I had been looking forward to meeting him for so long. काफ़ी सालों से मैं कोशिश कर रहा था and मैं उसके ऑफिस ज़्यादा रहता था पहले भी क्योंकि I had a good relationship with people working at G Unit. But most of the times वो या तो ऑफिस में नहीं होते थे, he would be touring or traveling somewhere else or maybe just busy in the meeting room. तो पर एक बार ये हो गई मुलाकात and I was it was a really emotional moment for me because I met him and we chatted for minute and a half in the office. Again, not a long meeting, but we just exiting the office actually, and he was coming through the alley, and he knew about me because they जो साथ में काम करते थे, used to obviously keep telling about hip hop and how we have always supported him through his ups and downs. So वो meeting was very special to me because again he's one of my favorites, and meeting him in his office and Yes. him being aware of the work that I do was amazing. And the second thing was being on I can't say like for what purpose it was, Yeah. but being on a Zoom call. I was once on a Zoom call with Jay-Z. It's so crazy sounding, but Jay-Z. I mean, when I think back, Huh. like ये हुआ कैसे? But yeah, I was on a Zoom call with Jay-Z once, with a few more people, and it was insane to just be there on the same call as Jay-Z. It was nuts. So just looking back at it, I think like it's crazy, like how The pioneer of hip hop. yeah, I mean it's Yeah. Jay-Z, like pioneer of hip hop and pioneering hip hop and business and one of the greatest rappers, one of the greatest artists to ever live. So I think those two. There are obviously more experiences, but those two are really Memorable, most very memorable. yeah. अभी आप आ रहे हो 50 भाई आ रहे हैं इंडिया, Yes. डिवाइन भाई ओपन कर रहे हैं, प्रदीप Absolutely. यंग राजा. Yeah, it's going to be a great show. I'm definitely trying to be there. Great. Hoping to be there for sure. I was actually there when he performed for the first time in 2007. Yes. Front row. मैं स्कूल में था उस टाइम पे, मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा था कि Yes. 50 सेंट इंडिया में. Very good. I was there front row because I was such a huge 50 fan. I'm actually a very big 50 fan. So I was there front row. It was such an amazing concert, and he's coming back after 16 years. So it's going to be very exciting, and obviously Divine. And again, 50 is one of his favorite artists. Yes. One of his उनकी biggest inspirations. हाँ इंस्पिरेशन, क्योंकि वो उनके फ्रेंड बहुत ने सारी कोई बात कर चुके हैं। टी-शर्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल फिर बिल्कुल, उन्होंने पूछा ये कौन है, ये कौन है? फिर गाने राइट करके दी. यस. बिल्कुल फिर वो राइट करके दी सीडी, वो हाँ. स्टोरी है उनकी, one of the documentary or something he spoke about. Yeah. और भी काफी बारी he has mentioned to me also personally that 50 is one of the reasons he started rapping. So I'm sure it's such a surreal moment for him, like performing just before 50 at his show in India. I mean, so crazy to even Yes, think. man, I'm also Life is excited. crazy. But very excited for that show. Hopefully I can be there. Great. But I've seen 50 skip Aarti twice actually after that also. I was there at the final lap tour stop in Barclays in Brooklyn also a couple of months ago. So it was a great show, and he's selling out arenas everywhere in the world still 20 years later. It's incredible how big an international fan base he has. उनकी लेगेसी, गानों की और उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है ना. Internationally इंटरनेशनली बहुत बहुत बड़ी ज़्यादा. legacy. He's one of the very few
artists actually, not just rappers, हाँ artists Artists. from across genres who can still, at this age, in this day, 20 years after his debut, still do 103 shows around the world. It's crazy. He's going to India, he's going to Kazakhstan actually right after that or right before that. A lot of people don't go to these markets and perform, you know, but he has such an international, such a big audience. He literally go to any country in the world and still do a show there. So it's crazy. Right? वही ना कि खुद की लेगेसी इतनी बड़ी है गानों की, मतलब मोस्टली जब मैं खुद क्लब्स में आता सुनने के लिए हिप हॉप नाइट से करके, ऐसा होता ही नहीं कि 50 के गाने ना हो प्लेलिस्ट में। तो लेगेसी इतनी बड़ी है गानों की। South Asian fans बहुत ज़्यादा हैं। Brown people always love 50 because actually उसी टाइम पे ही इंटरनेट आ रहा था इंडिया में, स्प्रेड हो रहा था, और उसी टाइम पे YouTube आ गया था। 50 का, you know, 50 and again as I said like the whole G-Unit, Shady, Aftermath era, उसी टाइम पे ही उनकी पीक थी, तो that's part of the reason why. And similarly in other markets as well, that's why he's so big and his songs just cut across boundaries and cultures. I'm excited for the show. Yes. पाजी आपको क्या लगता है कि इंडियन हिप हॉप सीन 3 साल बाद आप कहाँ देखते हो? I think it's really bright, but I think there's one concern that I have, and I was talking to somebody the other day as well. मुझे लगता है कि ना जो एक आर्टिस्ट हैं जो बहुत हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, perform in the sense commercially on streaming numbers and also live shows, उनके और जो next level पे हैं उनके बीच में काफी बड़ा difference है. So we have a lot of big stars and we have a lot of up and coming artists. Yes. जो बीच का जो gap है वो काफी ज्यादा है, बीच के gap पे बहुत कम है. हाँ. And I think उनको एक step ऊपर level up करना बहुत जरूरी है at this stage. And obviously it's not their sole responsibility, वो सबकी है, पूरी इंडस्ट्री की है, आपकी, मेरी, मीडिया, label execs, sorry, producers, artists. But I think for the economy to sustain in the future, I think that's very important. How do we make the mid-level or the upcoming artists rise to a level where they can also sustain, you know, have a sustainable career. उनको भी ऐसा हो कि हाँ हिप हॉप के थ्रू या म्यूजिक के थ्रू जनरली उनकी अच्छी कमाई हो सके और you know, अच्छा लाइव शोज आते रहे या अच्छी स्ट्रीमिंग इनकम आते रहे. I think एक वो चैलेंज है. And I think also another challenge that I think we face is that थोड़ा सा सॉन्ग राइटिंग सेंस की थोड़ा सा I think lack है जो कई आर्टिस्ट हैं जो who are coming up in the game. And I think that's global. Even America में I find that there's a slight problem with some artists जो आजकल के में आ रहे हैं, उनको सॉन्ग राइटिंग में इतनी ज़्यादा उनकी स्किल्स नहीं है. I think that need to be improved. But I think we have a very bright future. I think next 4-5 years, जैसे पूरी इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, people are more aware of their rights and you know, more aware of contracts and agreements and कैसा म्यूजिक चलता है, कैसा नहीं चलता, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे navigate करना है. All those things people are much more aware now, and I think we have a bright future. We just have to keep going and create a holistic kind of an environment where more artists can thrive, more artists can earn, you know, better money and make a sustainable career out of what they are doing right now. Great. तो वही इंसान होना कि हम सबको we all are Absolutely. All labels and all media partners and radio and DSPs बिल्कुल मिलके ही इंडस्ट्री ग्रो होती है. सिर्फ एक ही लेबल, अगर एक ही लेबल सिर्फ अच्छा कर रहा है, बाकी नहीं अच्छा कर रहा है, उसके साथ इंडस्ट्री नहीं ग्रो होती. सभी को ही अच्छा करना पड़ता है एक टाइम पे, तभी पूरी की पूरी ग्रोथ होती है. great. अभी कोई चाहता है कि कि सब मिलके करें और सीन को और बड़ा बनाएं. एंड भाई फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो खाली आप मैं आपको जाने नहीं दूंगा भाई. ये wow. सिम्बा की तरफ से कुछ स्पेशल Thank you. गिफ्ट है आपके लिए. Thank you so much. एंड अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल एक बॉक्स है. I appreciate it. बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू सर. भाई आप बताओ, यू नो फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आए हो, कैसा लगा आपको यार? Amazing. Very, very nice environment and the people that you're working with here. बहुत अच्छा experience था. In fact, this is my first video interview podcast of my life. So it's a different feeling. Because usually in my journalism days, I used to like, I mean, I still interview, but yeah, I'm interviewing artists. But video interviews तो मैं नहीं करता था, but I'm the one who's usually interviewing artists. So sitting at this side and on video is nice feeling. First time. But मुझे भी काफी अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग बात भी कर रहे थे कि कितना टाइम हो गया? हाँ कितना एक टाइम हो साल गया, से आई ऊपर हो थिंक 1 साल से ऊपर हो गया. मुझे याद है लास्ट टाइम जब डिवाइन बाय दिल्ली में परफॉर्म कर रहे थे तो पार्टी के पीछे भी हम मिले थे, फिर बीच में आपसे बात भी हुई I think थी. this is, I think timing wise this हाँ. was great Yes. because उसके बाद भी you know काफी कुछ हुआ and हाँ. we had more things to talk about because of that. Yes. और सही टाइम पे सही चीज होती है. बिल्कुल. आज होगी. Like, thanks a lot. Thank you so much for having me and finding me worthy enough to be on this platform and letting me speak about my journey and about my work. Thank you. आई एम और कि appreciate आप it. यू नो पॉडकास्ट पाए. ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. Thank you. यू नो आप जो इंडियन हिप हॉप प्ले भी करने वाले उसके लिए भी ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you. खतरनाक काम Thanks a जी lot. फॉर. Thank you. Peace.